Greetings, students. I hope you're all doing well. Hi, this is Satyaki Chakraborty from Indraprastha Law College, and today's subject is environmental law. And the topic that we are going to discuss is basic definitions of environmental law, a basic introduction to environmental law itself. Students, before we get into the environmental law, the domains of environmental law, let us first discuss about a basic introduction to the environmental law. What is environment all about? What are the basic definitions, or what are the elements that are connected to environment itself? The environment is a very important for us to understand because it constitutes our surroundings and affects our ability to live on earth. Obviously, we live in an environment, we live in earth, we are earth dwellers, and its basic surroundings and its basic elements that create the environments affects us. It comprises of the air we breathe, the water that covers the most of Earth's surface, the plants and animals that surround us, and much more. It is therefore very important to understand and appreciate the importance of environment in our daily life. So obviously, since we live in an environment, we breathe air, we use waters, there are several elements in earth that we tend to use. We are surrounded by flora and fauna, that is plants and animals. So this is the basic ecosystem or the atmosphere where we tend to live. So it is very important in our daily life, and thus environment plays a very important role because it is very much connected with our daily life itself. In recent years, scientists have been very carefully examining the various ways by which people affect the environment. They have found that we are causing air pollution, deforestation, acid rain, and other problems that are dangerous both to earth and to ourselves. Students, there is no point explaining to you this because obviously you all know that the cause of pollution, be it air, be it noise, be it soil, or whatever, deforestation, urbanization, and the cause of acid rain, this is what we are ourselves are to be blamed for. Our own doings, that what we have done and that what we have implemented on the Mother Earth has caused all these problems, which are not only dangerous to the nature itself, but somehow now when it is lashing back, it is also causing problem to us. So we are very much acquainted, or we are very much accustomed with the kinds of problems that we tend to face owing to the pollution itself. Now, let us look at the meaning of the term environment. The word environment is derived from the French word environner, which means to encircle or to surround. So, हम लोग ये देखते हैं कि environment एक French word से लिया गया है, जिसका मायने है environner, जिसका इंग्लिश में मायने होता है encircle और यह surround करना. The most suitable definition of environment is the sum total of water, air, and land, and interrelationships that exist among with human beings, other living organisms, and material. Of course, when we talk about the environment, we have to take in account every element, be it living or non-living, which has its own term like biotic or abiotic, that constitutes the environment itself. The environment comprises of us, we the human beings or Homo sapiens, as well as water, air, land, and other living organisms or non-living organisms, and the material that creates the environment itself. The geographical meaning of environment is as follows. It is a combination of living and non-living things and their mutual interaction with each other, which leads to an ecosystem. So आप स्कूल में एनवायरमेंटल स्टडी पढ़े ही होंगे. एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग देखते हैं, या फिर ये ज्योग्राफी में भी हम लोग ये जो डेफिनेशन है इकोसिस्टम का, जो एनवायरनमेंट को बनाता है, वी आर वेरी मच एक्विंटेड विथ इट, कि एक कम्बिनेशन जो होता है एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम का, ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन में होता है. ऑब्वियसली द एनवायरमेंटल कंप्राइजेज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इटसेल्फ, जहाँ पे ह्यूमंस भी है, ऑर्गेनिजम्स भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे बिल्डिंग्स एंड लोड्स ऑफ स्टफ लाइक दैट.
But in some way or the another, we are in connected to each other. There is a mutual interaction, be it because earth comprises of several living and non-living beings, but somehow we are interconnected with each other, जहाँ पे एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है क्योंकि हम एक साथ ये इकोसिस्टम में सरवाइव करते हैं. ये जो इकोसिस्टम है इसमें लिविंग बींग्स भी है, नॉन लिविंग बींग्स भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, नॉन लिविंग बींग्स भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इंटरकनेक्टेड है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और हम लोग एक साथ सर्वाइव करते हैं ये इकोसिस्टम में. और ये इकोसिस्टम टोटली कंप्राइजेस टू फॉर्म अ एनवायरनमेंट इटसेल्फ. The environment encompasses all living and non-living things occurring naturally on earth. The Honorable Supreme Court has the following definition. So that is what we have been discussing. कि environment comprises of living and non-living being. तो environment में living being भी है, non-living being भी है, एक साथ जो हम लोग survive करते हैं. और एक Honorable Supreme Court का जो definition है, environment is a difficult word to define. Its normal meaning relates to the surrounding, but obviously this is a concept which is relatable to whatever object it is which is surrounded. The environment is a polycentric and multifaceted problem affecting the human existence. Obviously, environment को polycentric और multifaceted इसीलिए बोला जाता है कि environment comprises of everything on earth itself. आप ह्यूमंस की बात करो, आप माउंटेन्स की बात करो, सीज की बात करो, एक सिस्टम की बात करो, फ्लोरा या फौना, प्लांट, एनिमल्स की बात करो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो, सब कुछ एक साथ यहाँ पे सरवाइव करते हैं. जो भी आप बोलो, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स, हाउसेस, कार्स, industries, machines, whatever we have, everything comprises in this earth itself. So we as a living being, or animals as a living being, or plant as a living being, whatever it is, every forms of life and every forms of those objects which do not have life in itself all tend to survive here. So environment is a polycentric and multifaceted, which somehow affects our life itself. Because everything survives here and we are all connected with each other. So इसीलिए जब भी कोई pollution होता है, जब कोई disruption होता है सिस्टम में, सबको इफेक्ट होता है. नेचर को भी इफेक्ट होता है. नेचर जब इफेक्ट होएगा वहाँ से बैकलैशिंग होगा, तो वी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड. नाउ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर क्रिएटिंग एट द एंड ऑफ द डे, like pollution, owing to various steps that we have taken to modernize our life, like industrialization, urbanization, or whatever we do at the end of the day, is affecting the nature or affecting the environment or the ecosystem, and in a direct or indirect way we are also being affected out of it. Today, protection of environment is a global issue as it concerns all countries irrespective of their sizes, stage or development or ideology. Today, the interaction between society and nature is so extensive that the question of environment has assumed larger proportions affecting humanity at large. Obviously, that is what we have been discussing, that environment is a global issue right now. Every country, every nation takes the issue of environment very seriously. एक आइडियोलॉजी, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जैसे सोसाइटी एंड नेचर दोनों को हम लोग कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है, द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, द क्वालिटी ऑफ नेचर हैज़ डिग्रेडेड. सो somehow it has affected humanity also. We have ourselves degraded, created problems for the environment owing to pollutions and several other activities that we tend to do. It has affected our lives, and now every country, every nation takes this issue of environment very seriously. Obviously, because everything is connected to each other. आप कुछ ऐसे काम करोगे जैसे जिसके लिए नेचर इफेक्ट होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में भी होगा, हम लोग भी फेस करेंगे. Now, let us look at the objectives of environmental protection. Environment को क्यों protect करना चाहिए? Number 1, control restricted judicious use of resources. There should be a controlled and restricted and judicious use of resources. जो resources हैं हम लोगों के पास, be it exhaustible or non-exhaustible. Non-exhaustible मतलब जो renew कर सकते हैं,
और एग्जॉस्टिबल मतलब जो रिन्यू आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, चारकोल, कोल, ये आप जो यूज़ हम लोग करते हैं, ये चीज़ हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। जो भी रिसोर्सेज है जो डेली काम में हम लोगों को लगता है, बीट फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, पर्सनल पर्पस और वॉट एवर इट इज़, उसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे से, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे से और बहुत इंटेलिजेंट वे से यूज़ करना है। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो भी इसको यूटिलाइज कर सके, मिस यूटिलाइजेशन इसका ना हो। सेकेंडली, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। एनवायरमेंटल जो क्वालिटी है, जो नेचर का जो क्वालिटी है, इकोसिस्टम जिसके लिए प्रॉपरली बैलेंस्ड है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर हम लोग पोल्यूशन करते रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे विच इज़ हैजर्डस टू नेचर, which is a threat to the nature or the environment itself, the quality of nature will degrade, and this will affect not only the living organisms or the plants or the animals, it will also affect our life, creating several problems. And there are several problems that of course we are facing today, owing to the degradation of the quality of environment at the end of the day. Thirdly, protecting and balance of ecosystem. Obviously we need to protect and balance the ecosystem itself. Fourthly, achievement of substantial development. Obviously a substantial development is very much required, because owing to the substantial development we can protect the nature and we can also maintain the balance of nature itself. So several necessary steps are need to be taken where we can control the pollution that is being created, and several better steps should be taken where the quality of nature that has been degraded need to be uplifted at the end of the day. वर्किंग ऑन पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो पोल्यूशन जो हम लोग क्रिएट करते हैं, एयर, वाटर, नॉइज़, सॉइल, इसको बंद करना होगा। इसके लिए हम लोगों को नेसेसरी स्टेप्स लेना है, जैसे ये पोल्यूशन बंद हो, और इमीडिएट नेसेसरी काम भी करना है जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है पोल्यूशन के लिए, उसको हम लोग अपलिफ्ट कर सके, उसको हम लोग इरेडिकेट कर सके। इन्वायरमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम लोग ये देख चुके हैं स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इसको मैंडेटरी किया गया है। हर एक बोर्ड्स में, रीजनल लेवल में, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में एनवायरमेंटल एजुकेशन को मैंडेटरी किया गया है, और ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और हायर स्टडीज़ में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So people should be aware of our environment, people should be educated about it, so that grassroots level में education होगा, promotion होगा environment को protection करने के लिए, तो लोग थोड़ा conscious भी होंगे और वैसे काम भी करेंगे कि environment के quality को protect कर पाए। Lastly, punishment of the polluter. जो व्यक्ति, जो आदमी environment को pollute कर रहा है, environment के ऐसे काम में उलझा हुआ है जिसके लिए environment का quality degrade हो रहा है, that person need to be punished. So obviously laws have been implemented, laws are created where the quality of environment or the flora and fauna are protected and conserved, and any person committing such act should be taken to trial, should be penalized. Now let us take a quick peek at the components of environment. ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो कमिंग क्लासेस में है उसमें हम लोग एनवायरमेंटल लॉ को लेकर डिस्कस करेंगे। क्या है सीआरपीसी, सीपीसी के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा, प्रोटेक्शन ऑफ फौना, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है जो बेसिक्स है एनवायरनमेंट के लिए और एनवायरमेंटल लॉ के लिए, दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट। अभी हम लोग बात कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। सो व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट एट द एंड ऑफ द डे? इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। And what is abiotic component at the end of the day? Which is non-living things, which are soil, water, air. However, non-living component are also divided into three categories. Number one, lithosphere, that is rocks, soil and solid. Hydrosphere, जो water component को बोला जाता है. Thirdly, atmosphere, which is gaseous envelope. And lastly, energy component includes solar energy also, जो atmosphere की subgenre में आता है. उसके बाद लास्टली जो हम लोग देखते हैं आफ्टर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज एनर्जी कंपोनेंट,
क्योंकि एबायोटिक के अंडर में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर भी आ जाता है। और लास्टली हम लोग देखते हैं एनर्जी कंपोनेंट विच इंक्लूड्स सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। All this energy helps in maintaining the real life of organism. सोलर एनर्जी आप लोगों को पता है, हम लोग उसको सोलर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसा ही ना सेम वही न्यूक्लियर एनर्जी भी है जिसको एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो डैम्स या फिर ये बनते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो रिवर्स के ऊपर, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी कंपोनेंट्स. So this comprises as a components of environmental itself. So students, this will be all for today itself. So please याद रखिएगा कि environment की basics जो हम लोग आज discuss किए, कि environment क्या है, environmental ecosystem क्या है, उसको क्यों preserve करना चाहिए, उसको क्यों conserve करना चाहिए, उसके components क्या है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए. And in the next classes, we'll take a quick look about certain definitions of environmental law, and slowly we will get into the origins of environmental law from the prehistoric times and the causes of the problems in the environment system, that is pollution, which has played a very dominant role in degrading the quality of the environment or the ecosystem itself. So this will be all for today itself. Thank you, class.